on the topic differentiation or differentiability. In the previous lectures, if you remember, this topic was being discussed in May month, and students, let me just differentiability. See the voice issue. If you remember, this topic was being discussed in May month, and right. Let me take 1 minute and let me mute my system. Right, all well. So students, so this topic was being discussed in May month, and this chapter contains two things: continuity and differentiability. Right, and continuous functions, concept of continuous functions, and various theorems, various questions, and NCERT exercise 5.1 we discussed during that time, and the video lectures I have given the name part 1, 2, 3, 4. So in those 4 parts, this continuity topic and the exercise questions, NCERT exercise questions, have been covered. Students, this chapter is the first chapter of calculus. Your calculus portion contains chapter 5, chapter 6, which is applications of derivatives, chapter 7, which is integration, chapter 8, which is application of integration, and chapter 9, which is differential equation. Right, so from chapter 5, continuity and differentiability, up to differential equations, all these chapters are based on calculus. Correct? So calculus is a very vast topic, and especially in 12th mathematics, it makes around 40% of the syllabus. So very important, and things are correlated. Means if you don't understand differentiation properly, you will not understand integration. If you don't know integration, you can't do application of integration or differential equation. So slowly, step by step, we have to learn the things, we have to understand the things, and if maximum we will discuss the things in detail. More and more questions we will try to discuss. So the continuous function, roughly speaking, any function having no break at a particular point A was said to be continuous at x equal to A. Right? More mathematical definition, we saw that find left hand limit at x equal to A, find right hand limit at x equal to A, and find actual value of function at A. And in case they all the three agree, then we say function is continuous at x equal to A. So these two things we discussed, and we saw 1 or 2 more theorems as well. Right? These all things we discussed, and various questions we worked on this. So the topic, if in case it is pending, please complete. Please find some time and complete. And today's class is not a revision of continuous functions. Today's class is based on differentiation. So what is differentiation? What is differentiability? Its glimpse we saw in class 11th in the chapter 13, limits and derivatives, if you remember. Right? So let us see, and because ये सारे खेल हम खेलते हैं functions के ऊपर, तो सबसे पहले एक ले लेते हैं कोई function और उसके ऊपर बात करते हैं. Right? Please be ready with your notebook and pen, because let us understand the things, let us write the things here itself. We need a figure, so before we discuss anything else, let us begin with figure. This is my XY axis. Okay. Suppose there is a function y equals to fx. So function है, तो इसका कुछ graph भी रहा होगा. Randomly I'm taking any function. Suppose this is the function. Okay. Say there is a point of observation A,
A. This is A. Okay, its corresponding value. This function is y equal to fx. Okay. Say there is a second. There is a line which cuts this curve like this. Okay. Second. Because that tangent touching the curve or intersection point is only one. If more than one point of intersection, second. And say this point is at h distance, and say this point is a plus h. So its meaning will be that this in between distance will be h. Okay. Say the function is y equal to fx and this point x-axis point is a. So its image ये क्या होगी? Students, मैं लाइव चैट पे देख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन होगा तो आपसे जरूर इंटरेक्ट भी करेंगे, तो बी रेडी फॉर आंसरिंग. If this point is a, this point will be how much? fa. Correct? है ना? ठीक है. और अगर ये point a plus h है, and let me draw a perpendicular on y-axis from this point, and let me give some name. Say this is capital A, say this is capital B, and x-axis पर अगर ये a plus h है, तो इसकी इमेज y-axis पे यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होगा? f of a plus h. Okay. Now its meaning is this distance is f of a plus h, and if I draw a perpendicular from here to here, you can draw the figure. Then this distance is fa plus h, this distance is fa, so in between distance will be f of a plus h minus fa, and this angle, say it is theta, so this line where it meets x-axis, this also will be theta, isn't it? I hope the line is a straight line. Okay, this angle will also be theta. Now let y equal to fx is a function, and a line cuts its curve at x equal to a and x equal to a plus h. Right? Other notations are mentioned in the figure itself. I am not writing. Okay. Now, if you want to find out slope of this second, which will be slope of this line, this intersecting line. You know, slope, if a line makes theta angle with positive x-axis, slope is given by tan theta. And tan theta, if this is theta, this also will be theta. So tan theta value I am going to find out from this right angle triangle. You know, altitude upon base. So altitude how much? fa plus h minus fa whole upon h. है ना? I hope things are visible. तो ये हो गई वैल्यू tan theta की. अब सुनो कि suppose this h is very less, 0. So what will happen if you imagine कि h is very less, means these 2 points are very close or starting coinciding with each other. Then ये जो लाइन 2 पॉइंट्स पे कर्व को कट कर रही है, ये एक ही पॉइंट पे कट करने लगी और हम बोलेंगे टच करने लगी, तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे. So if h tends to 0, line becomes what? Tangent. And tangent to what? Tangent to the curve. Okay. And then slope of tangent at x equal to a is given by, अब इसमें मैंने अटैच कर दिया h, भाई टेंजेंट तभी बनेगी जब h is very less, moving towards 0. मतलब limit h tends to 0, I am going to attach. And बाकी सब मैंने वैसा का वैसा ही रखा है, f a plus h
minus fa whole upon h. And this thing is important for us, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले पे आप गौर करें तो ये है क्या, ये एक रेशियो है. किस चीज का रेशियो है कि एफ ए प्लस एच एंड एफ ए वाई एक्सिस पे होंगे. तो कर्व वाई एक्सिस पे जितना जिस रेट से बढ़ रहा है ना, ये डिफरेंस है दोनों का, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कर्व अराउंड एक्स एक्सिस. सो it is giving us the rate of change of y coordinate with respect to the rate of the change in x coordinate. So the same value is also called as dy upon dx, right? Note that dy is the notation for infinitesimally small change in y coordinate divided by dx. D is used for very small change, not measurable practically even. So this is also called as dy upon dx, and we have a special name for dy upon dx. This is called as differential coefficient of y with respect to x, right? One more line will come. Dy upon dx is called as differential coefficient or derivative. You know, there is one more name, derivative of y with respect to x. Okay, we many a times denote by y prime also, y dash also we say, or we y1 also we say, or if the function is y equal to fx, f dash x also we say. तो ये तमाम तरह के सिंबल हैं इसको डिनोट करने के. ठीक है, अब बात आती है कि what is the meaning of differentiability. So let us see some more notes. Let us see some more terms are there which we use in our talks and discussions frequently. Let us see them. Let us see some notes. अब एक बात पॉइंट की कि ये तो लिमिट है, और आपने पिछले टॉपिक एंड इन प्रीवियस क्लास 11th यू मस्ट हैव सीन कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट बोथ आर इक्वल, राइट? सो ये हमेशा एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं. तो ये जो है ये बिकॉज इट वॉज ए प्लस एच, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टेकन इन राइट साइड, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज right hand derivative. So this right hand derivative is nothing but the same thing. Let me write again at A. This is now similarly means the same figure we can draw for left hand derivative also. Instead of a plus h, I can take a minus h like this. The line may cut. So, but मैं उसको ले नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि if RHD means right hand derivative is this quantity, then left hand derivative can also be written, right? And similar change will come. Limit h tends to 0, fa minus fa minus h whole upon h. This will come. Okay. नाउ लिमिट्स, तो लिमिट्स हैं, उन पे हमारा नियंत्रण तो है नहीं. वो हो सकता है रियल नंबर के इक्वल हो, वो हो सकता है कि इक्वल ना हो, एग्जिस्ट ना करे. तो अगर जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, सो इफ दे डोंट एग्जिस्ट और दे आर नॉट म्यूचुअली इक्वल हियर, इफ then we say function is not differentiable. But if both are equal, if LHD is equal to RHD, then we say y equal to fx function is what? Is differentiable at x equal to a.
y equal to fx function is differentiable at x equal to a. Okay, and the whole concept of differentiating the things, finding its derivative is called as differentiating the function, right? And the whole concept is called as differentiability, right? So this is one very important note that they will ask you in the questions, right? That check whether function is differentiable or not. तो function is differentiable or not, ये check करने का solid तरीका, full proof mathematical तरीका है. You find out left hand derivative, you find out right hand derivative and check whether both are existing or not and both are mutually equal or not. तो ये अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है. अच्छी बात. अब एक बात और कि ये जो लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. तो वी हैव वन मोर वे दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग. ज्योमेट्रिकल मीनिंग. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये कि ये जो dy अपॉन dx है ये रिप्रेजेंट क्या करता है. कोई मुझे बताया लाइव चैट में, अभी जस्ट नाउ 5 मिनट पहले डिस्कस किया कि ये व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx. ये ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है. इफ एनीवन हैज द आंसर, स्लोप. देवांशी जैन इज वेरी राइट, स्लोप. लेकिन पूरा कर दो उसको आंसर को. स्लोप किसका स्लोप? टेंजेंट, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द लाइन. सही, पूरी बात कह देंगे कि डी. और ये बड़ा कहने को एक लाइन है लेकिन ये अपने आप में पूरा संसार समेटे हुए, मतलब पूरा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट अपने में समाहित किए हुए हैं कि क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू a. केतन वर्मा इज वेरी राइट एंड ही हैज गिवन द कंप्लीट आंसर. राइट. सो dy अपॉन dx रिप्रेजेंट्स, और इससे हमारे तमाम मुश्किलात हल होने वाली हैं. dy upon dx represents the slope of tangent at what? At x equal to a. समझे? तो अगर हमसे कोई पूछे कि whether this function is differentiable or not at x equal to a, then I need to check whether slope of tangent exists or not. बजाय ये चेक करने के, वो तो हम कर ही सकते हैं LHD इक्वल टू RHD चेक कर लो इक्वल है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है. एक और तरीका है, वो तरीका ये कि ये तुम ये चेक कर लो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट तब एग्जिस्ट करेगा जब टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी. एक और नोट, देखो भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट तब एग्जिस्ट करेगी ना जब टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी. और टेंजेंट कब एग्जिस्ट करती है? जब कर्व एग्जिस्ट करेगा. लेकिन कर्व में कुछ शर्तें हैं कि कर्व क्या हो, ब्रेक ना हो वहां पे. ऐसा ना हो कि कंटिन्यूटी वहां पे ब्रेक हो रही हो. पॉइंट 1, कर्व जरूर वहां पे कंटिन्यूअस होना चाहिए. दूसरी बात, अगर वो ब्रेक हो रही हो तो टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करोगे, राइट? सो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. एक और बात कि अगर सपोज यहाँ पे कहीं पे वर्टेक्स आता है, सपोज मॉड एक्स का ये ग्राफ है, सपोज यहाँ पर दिस ऑल्सो इज अ टेंजेंट, दिस ऑल्सो इज अ टेंजेंट, तो ऐसा नहीं होता. तो जहां पे भी वर्टेक्स आएगा वहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट आप पॉसिबल हो सकती हैं ड्रॉ करवा पाना. तो हम बोलेंगे कि यूनिकनेस जो है वो टेंजेंट की वो वर्टेक्स पे नहीं होगी. तो जहां कहीं पे भी वर्टेक्स आएगा वहां पे हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है. तो एक शब्द में अगर हम बोलें तो ये दोनों बातें होनी चाहिए कि इट शुड बी कंटिन्यूअस, कर्व शुड बी कंटिन्यूअस, शुड नॉट हैव ए वर्टेक्स. इन दोनों को मिक्स कर दें तो कर्व शुड बी स्मूथ एट दैट पॉइंट. इफ इट इज स्मूथ देन वी कैन ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट. और अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है तो उसका स्लोप भी एग्जिस्ट करेगा, और स्लोप एग्जिस्ट करेगा तो dy अपॉन dx एग्जिस्ट करेगा. तो इसलिए कि dy अपॉन dx एग्जिस्ट तब करेगा जब कर्व वहां पर स्मूथ होगा. तो मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं कि dy अपॉन dx will exist
at x equal to a if the graph of the function is smooth at x equal to a, right? And this will make your work very easy. That if you want, and let me frame it in a box, that differentiability can be considered synonymous with smoothness at x equal to a. Of course, at that particular point. Right, and this you can simply keep in mind, and you can answer many questions whose graph you know, right? तैयार है? तो तैयार हो जाइए questions का सामना करने के लिए. And I'm going to give you some questions, and I'm going to ask you whether that particular function at particular point is differentiable or not. आपको क्या करना है? आपको फटाक से उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और देख लेना है कि वो ग्राफ वहां पर स्मूथ है. स्मूथ मतलब दो बातें, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है या नहीं है. ओके, और अगर वहां पर कंटिन्यूअस एंड नो वर्टेक्स, बोथ थिंग्स शुड बी देयर. अगर वहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है यहाँ पे या कहीं पे वहां पे वर्टेक्स आ रहा है तो समझ लो कि वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है. करेक्ट, इस बात को ध्यान में रखेंगे. और आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस एंड would expect the answer in the same lecture in live chat. So some questions that check whether the following functions are differentiable at x equal at the given point. Tan x at x equal to 0, modulus x at x equal to 0, y equal to fractional part x at x equal to 1. The same function y equal to fractional part x at x equal to 1.5. कुछ और? Y equals to sin x at x equal to pi by 2. Answer part. Write part number and write your answer. लेकिन सिर्फ हमें आंसर नोटबुक में नहीं चाहिए, हमें उसका वो भी चाहिए क्या, ग्राफ भी प्लीज आप अपने ड्रॉ कर लीजिएगा. यहाँ पे आंसर मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं अगर आपको बात समझ में आए. करना क्या है, उसका ग्राफ देखना, ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने में ये देखना है कि वो स्मूथ है ग्राफ वहां पे कि नहीं है. स्मूथ का मतलब दो बातें होती हैं, क्या, कि ग्राफ शुड बी कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, शुड नॉट हैव ए वर्टेक्स एट दैट पॉइंट. ठीक है, अगर ये दोनों बातें वहां पे हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि जो है वो हमेशा तो वो वहां पर डिफरेंशिएबल है. राइट आंसर, आई एम वेटिंग. एंड आफ्टर दिस, that after using that formula, the concept is also known as first principle of differentiation. The entire concept, the पूरी बात जो हमने आज डिस्कस की, first principle of differentiation we call it. Okay, and using this first principle of differentiation, please write your answer. Part number please write. Aman, part number please write. Then you are saying yes, no, no, yes, 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 no, no, yes, yes. I think yes, you are right. है ना. बाकी भी मैं चेक करूंगा फुर्सत से. जब आप प्लीज अपने आंसर्स लिख दीजिए. अंजलि शर्मा, दिव्यांश चौधरी, अमन हुसैन, दिव्यांशी, वर्ष, many people are responding. I'm happy that if you're writing your answer, please write and I'll certainly read and check. Right now the next thing is that using this formula, right hand derivative and
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. इफ वी फाइंड हमारे बहुत सारे हमारे फैमिलियर फंक्शंस हैं क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स, कॉस एक्स और दुनिया भर के एक्सपोनेंशियल एक्स एंड लॉग एक्स. उन सब को अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, देन वी गेट सम फॉर्मूला. सो सम important differentiations which are very useful for us, and those formula we will keep remember. Right, like d upon dx of x to power n is n x to power n minus 1. Okay, and putting n equal to 1 will give me dx upon dx equal to 1. Okay, and if I put n equal to minus 1, n equal to minus 1 will give me x to power minus 1, and this will become 1 upon x. And here if I put n equal to minus 1, I'll get minus 1 x to power minus 2, means minus 1 upon x square. So directly writing minus 1 upon x square. And d upon dx, if I put n equal to half, then x to power half matlab root x. And this will be equal to half 1 by 2 x to power 1 to minus 1, x to power minus 1 by 2, 1 upon root x. So it will be 1 upon 2 root x. ठीक है, तो ये रफ में मैंने निकाला है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, and we will use them directly. We have to keep remember in short. Okay, so this is about x to power n. Then there is the formula d upon dx a to power x. A raised to power x. A raised to power x, the value is a raised to power x into log a. Right? When we don't write base, we mean natural log, and the base is considered as e. Now, a to power x and x to power n both are different formula. X to power, there is a convention. It's very very important that initial letters a, b, c, etc. ये क्या लिए जाते हैं? ये constant लिए जाते हैं. Initial letters of alphabet, they are taken as arbitrary constant. I think it is not visible. Let me write down. I'm saying that these initial letters of English alphabet, they are taken as arbitrary constant. Arbitrary matlab from our choice we can assign the value, right? They are called, it is showing time, but it is not. Okay, I think some net issue is there, students. Is 1 minute, students. Let me see. Here it is working. One. Here it is working. Huh? There is no problem in that. Here it is properly working. Students, clear? Okay. Right. Students, right. Some net issue was there. No problem. Now we are now connected. Good. So some more formula. Sin x differentiation is cos x. Then cos x differentiation is sin x, है ना? मुझे पता है ये फॉर्मूले आप लिख चुके हैं क्लास 11th में. You have seen and you have written and you have worked on many questions, but टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो पूरी बात डिस्कस करनी है ना? Let us see them, let us revise them. In class 11th we have seen this formula. D upon dx of tan x is what? Is sec square x. Okay, you know well. And d upon dx of 1 minute, cot x how much? Cot x is equal to minus cosec square x. Then d upon dx, आप सोचिए लाइव चैट में सर आंसर कैसे दें? cosec स्क्वायर कैसे बनाए, है कि नहीं? कुछ बच्चे SQ लिख देते हैं. ठीक है. अच्छा, आप लोग बहुत using that software in live chat, just tell me,
I'm in search of that. So I'm saying d upon dx of sec x is how much? Sec x tan x, isn't? क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी होती है मैं कैसे इसको लिखूं. कुछ एक मैंने भी ट्राई किए हैं, I'll share with you, but मजा नहीं आया. cosec x cot x है ना. अच्छी बात. ये तो था हाल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. लेकिन अभी अभी चैप्टर 2 आपने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. उनको क्लास 11 में नहीं डिस्कस किया होगा, अब डिस्कस कर सकते हैं. तो आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे. सो बट हियर we are writing directly, right? Of course the value we have found from our first principle of differentiation only. So d upon dx of sine inverse x, if you find it will come like this: 1 upon root of 1 minus x square. And one more theorem you must have seen, that cos inverse x is pi by 2 minus sine inverse x. So if you find the d upon dx of cos inverse x, it will be d upon dx of pi by 2, which is 0, minus d upon dx of sine inverse x. So it will be d upon dx of cos inverse x will be minus of sine inverse x derivative, minus 1 upon root 1 minus x square. And quite similarly, d upon dx of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Cot inverse x differentiation is just negative of it, minus 1 upon 1 plus x square. Sec inverse x differentiation is 1 upon x root x square minus 1. And cosec inverse x differentiation is d upon dx of cosec inverse x is negative of it, minus 1 upon x root x square minus 1. Okay, fine. I hope it is very visible to you, right? Then, right, Siddhesh. Then, is there any more function left? हमारा प्यारा log x, वो क्यों छूट रहा है? उसको भी लेते हैं. तो log x differentiation is 1 upon x. And जब लॉग की बात आती है तो एक्सपोनेंशियल की बात भी आएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएशन इज द फंक्शन इटसेल्फ, राइट? अगर कुछ और छूटे हो एक तो कुछ, तो आप प्लीज उनको लिख लीजिएगा. एंड कुछ चुनिंदा फॉर्मूले जो हम उनके बगैर हमारा काम नहीं चलना, तो उनकी बात भी डिस्कस कर लेते हैं. और नाम तो सुना ही होगा आपने, प्रोडक्ट रूल, बिकॉज दिस ऑल was discussed in class 11th. And there is a rule, quotient rule. And there is one more property, linearity property of differentiation. भाई क्या बात है कि log x का डेरिवेटिव तो ठीक है, sin x का डेरिवेटिव तो ठीक है, log x into sin x का डेरिवेटिव निकालना हो तब क्या करेंगे, है ना? Suppose the question is that find out d upon dx of log x into sin x. हाँ जी, तो तब क्या करेंगे? तो फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए. उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल, एंड प्रोडक्ट रूल सेज that d upon dx, differentiation of two functions, multiplication f into g, is equal to f multiplied with derivative of g upon dx, dg upon dx, plus the second function g into derivative of first function into df upon dx. Okay, so the rule is called as product rule, and wherever you have to differentiate the multiply of two functions, this is super useful for us, right? तो ये तो हुई बात मल्टीप्लिकेशन की, बट सपोज डिवीजन में भी हो सकते हैं, कोशेंट भी हो सकता है ना? कहीं पे अगर आपको sin x अपॉन e टू पावर x को डिफरेंशिएट करना है ना, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तब क्या करेंगे? तब हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसका नाम है कोशेंट रूल. कोशेंट रूल जो है वो इस तरह से काम करता है कि d अपॉन dx of f upon g is equal to g multiplied with derivative of numerator function df upon dx
minus numerator function into derivative of denominator dj upon dx whole upon the denominator function square, g square. Right? So formula is very clear, very explicit. You have to use wherever the similar kind of question comes, and easily you can find out the derivative. There is linearity property also, that sometimes what you may need, that you have to find out, suppose d upon dx of मान लीजिए 2 minus sin x plus 5 cos x. ठीक है, तो जब कभी भी कुछ फंक्शंस प्लस या माइनस से जुड़े हों, ठीक है, और उनमें सिर्फ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, एंड द प्रॉपर्टी सेज दैट d अपॉन dx ऑफ afx plus bgx, where fx and gx are functions of x and a and b are our what? Are arbitrary constants. Then this is equal to a multiplied with d upon dx of fx plus b multiplied with d upon dx of gx. Okay, so this is what this is called as linearity property. ये हम पहले यूज कर चुके हैं, क्वेश्चंस में कैसे यूज करें ये समझ में आना चाहिए, है ना. ये है a, ठीक है, करेक्ट. एक रूल और है जिसके बिना भी हमारा काम नहीं चलना, और वो रूल है चेन रूल. चेन रूल भी समझ लेते हैं. And this is very important, chain rule, because in chapter 1 there was a concept composition of functions, function of function. तो chain rule, भाई मान लीजिए क्वेश्चन है कि d upon dx you find of sin power n x. ये क्या होगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, और suppose the question is that you have to find out d upon dx of sin of cos x square. तो यहां पर आप देखो तो मल्टीप्लाई नहीं है, है ना, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है. यस अमन, पीयूष, गहलोत, वर्षा, राइट. ओ मैंने मिस कर दिया नेगेटिव साइन, वर्षा आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, प्लीज उसको ठीक से लिख लीजिएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक. तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है. अगर आप इस पे ध्यान से देखें तो ये साइन इंटू नहीं है, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर नहीं, ये साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर. सो हियर फंक्शन ऑफ फंक्शन इज देयर, राइट, और वी कैन से कंपोजिशन ऑफ functions is involved, and that is to be differentiated. So we have a very simple rule that first of all, if you have to find out this, let us discuss this chain rule with the help of questions only. That just think d upon dx of sin x whole to power n, है ना. जब भी साइन में पावर होती है, हम पावर इस तरह से उसको कंसीडर किया जाता है. Now first it will be differentiated like x to power n. You know what is the differentiation of x raised to power n? X raised to power n, the differentiation is n multiplied with x raised to power n minus 1. Okay, so in place of this x, this bracket will come. तो सबसे पहले ये x to power n की तरह differentiate होगा, and you will get n multiplied with, in place of x, this entire bracket will come raised to the power n minus 1, and this sin x has come, right, and multiplied with, right, this is what chain rule says, that now it is multiplied with derivative of sin x. ठीक है, ये ब्रैकेट टू पावर n तो डिफरेंशिएट हो गया, अब ब्रैकेट का खुद का डिफरेंशिएशन, तो sin x डिफरेंशिएशन इज cos x. That's it, बात खत्म. ओके, ये पावर n minus 1, if you want you can write it here. Okay, this is. Similarly, let us solve this. Sin of cos x square. If you want to differentiate sin of cos x square, तो यहाँ पे 3 functions compose हो रहे हैं. पहले sin, उसके बाद cos, उसके बाद x square. तो उसी ऑर्डर में हम डिफरेंशिएट करेंगे. सबसे पहले sin differentiation. What is the sin x differentiation is how much? Sin x differentiation is cos x. So sin of this bracket differentiation will be cos in x
के जगह पे ये ब्रैकेट आ जाएगी, तो cos ऑफ दिस एंटायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो कुछ भी हो लिख दिया मैंने, साइन खत्म, उसका काम खत्म। अब है cos का डिफरेंशिएशन। cos डिफरेंशिएशन इज हाउ मच? cos x डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x, तो cos x स्क्वायर डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन x स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में माइनस साइन x स्क्वायर इंटू, अभी भी खत्म नहीं हुआ, इंटू, अब साइन का हो गया, cos का हो गया, एंड देन x स्क्वायर डिफरेंशिएशन। यू नो x स्क्वायर डिफरेंशिएशन x टू पावर n का होता है n x टू पावर n माइनस वन, सो x स्क्वायर डिफरेंशिएशन है 2x, तो इनटू x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, राइट। और कोई ये ना समझ ले कि ये x स्क्वायर और 2x, ये एंगल और 2x आपस में मल्टीप्लाइड है, तो उसके लिए हम जो भी अलग से मल्टीप्लायर्स हैं या माइनस साइन है उसको फ्रंट में लिखते हैं। तो थोड़ा सा और एक सिंप्लीफिकेशन, वन मोर लाइन, दैट माइनस एंड 2x यू टेक इन फ्रंट, माइनस 2x cos ऑफ cos x स्क्वायर into sin x square. Okay, right. 5.2 NCERT exercise contains similar kind of questions, right? उसी में से कोई एक चेन रूल का क्वेश्चन में ले लेते हैं और हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा ले? 7th ले लेते हैं, चलो। 7th question of exercise 5.2 chain rule. Because I know that in exercise 5.2 the previous ones you must be getting, and please solve yourself. Any randomly I have picked this question, let us all discuss. And the question is 2 root, we have to find out d upon dx of 2 root cot x square, isn't? Let us differentiate it. So you know how many functions are involved here? 3 functions, isn't? Equal to, now the property, linearity property says कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, जैसे 2 यहां पे, तो 2 को सीधे सीधे आउट बाहर लो, 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 का रोल, 2 बड़ा कोऑपरेटिव है, मतलब कांस्टेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव, टेक देम आउट। नाउ root, first of all root will be differentiated, and you know what is the derivative of root x? फॉर्मूले याद नहीं है तो आप टेबल देख के उसको यूज करेंगे, जब हम बार बार उसको यूज करेंगे तो आप ना चाहते हैं तब भी याद हो जाएंगे, तो परवाह नहीं करना कि फॉर्मूले आपको याद नहीं हो रहे, हो ही जाएंगे। रूट एक्स डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल टू, बट यहाँ रूट एक्स तो है नहीं, तो फॉर्मेट यही रहेगा, x की जगह पे cot x स्क्वायर आ जाएगा। So it is this 2, then 1 upon 2 root का डेरिवेटिव होता है 1 upon 2 root, and whatever inside the root is there, you write cot x square I have written, okay, multiplied with, now root का काम खत्म, cot differentiation is minus cosec square, you know, cot x differentiation is minus cosec square x, तो ये हो गया minus cosec square and whatever the angle is x square, so x square, okay, multiplied with this angle differentiation, x square differentiation is 2x, so into 2x, okay, and now give a little simplification, 2 get cancelled, 2x and minus you take in front, and this will become minus 2x, cosec square x square divided by root of cot x square, right? Very nice, Pragya, very nice, and good that you have written this complex equation here in live chat, right? मुझे बहुत ऐसा difficulty time लगता है ये exponent sign brackets सब use करने में, but good that you have written, nice. Whether answer is matching or not, I think that they have, this is complete here, right? But if you want to convert in sine and cos, that also can be done. Probably the answer in textbook is given like that. Minus 2x, this cosec can be written as 1 upon sine, and 2 times can be written sin x square. Cot को भी sin cos में ले चले, तो root of cot means cos upon sine, cos x square, and in numerator sin x square.
and then this becomes 1 root is cancelled, so minus 2x upon sine x square, and root of sine x square cos x square, है ना, and you know 2 sin theta cos theta, the 2 you multiply here, actually root 2 you have done here, and root 2 in numerator also you multiply, and then this will become sin 2 theta formula, and sin 2 theta formula if you use, this is going to be minus 2x 2 root 2x, let me write 2 root 2x divided by sine x square, and into root of 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, so sin 2x square, right? This is the final answer. I hope it should be matching. In exercise 5.2, please complete all the other questions. Question number 9th and 10th, they are asking you to prove that it is differentiable or not differentiable. Just take a quick look on 9th question, then this entire topic will be concluded here itself, right? Just a glimpse, and then the rest of the things you can do easily. Of exercise 5.2, they have given you a function fx equal to yes, thank you Chalk, modulus of x minus 1, and you have to prove that it is not differentiable at x equal to 1. देखो एक तरीका तो ग्राफ है कि मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा कर लो, और जिनको पता है, जिनको समझ में आ रहा है, उन्होंने इमेजिन कर लिया होगा और उनको दिख गया होगा वर्टेक्स. यू नो मॉड x बहुत पॉपुलर, बहुत काम का फंक्शन. ये रहा मॉड x मेरा, ठीक है. मॉड x माइनस 1 इफ यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू शिफ्ट मॉड x कर्व ऑन द राइट साइड 1 यूनिट. दिस इज मॉड x माइनस 1, right? And because it takes vertex and x equal to 1, it is not differentiable at 1. Because for being differentiable, two things are needed: that it must be continuous at that particular point, it must not have a vertex at that point. Because it takes vertex, it is not differentiable. But हम इसको mathematical definition से कैसे solve करेंगे, वो देखने के लिए let us do it in our mathematical manner. We will find LHD at 1, we will find RHD at 1, and we will check whether both are equal or not. If they are equal, it will be differentiable at 1, and because हमें not differentiable prove करना है, तो हम ये pray करेंगे कि वो unequal है. ठीक, चलो find out करते हैं LHD at 1. As per the formula, it will be limit h tends to 0 f1 minus f1 minus h divided by h. Okay, and this will be and if you see this modulus of x minus 1, actually it is combination of two functions. Modulus is a dual function. This is x minus 1 if x is bigger or equal to 1, and it is minus of x minus 1 if x is lesser than 1. Okay, keep remember this definition of modulus. Then to find out this will be f1. What is f1? If you put this is equal to sign 1 minus 1, 0, minus f of 1 minus h. So 1 minus h will be lesser than 1, right? Lesser than 1. So this definition will be applied, and in place of x, you are going to write 1 minus h. Let me use bracket minus x की जगह पे 1 minus h minus 1 and whole divided by h. Simplify. This is going to be 0 plus 1 minus 1 got cancelled. Is it h? Is it 1? नहीं, minus 1. Minus 1 ना? Minus h ना? बता दो मुझे मैं कंफ्यूज हूँ. LHD बता दो, मैंने निकाला है -1, तो आप चेक करके बता दो. ठीक है,
अब मैं निकालता हूं RHD. अरे मैंने ये क्यों कर दिया? -1 if x is greater or equal to 1 and if x is less than 1. हाँ, तो स्टूडेंट्स प्लीज yes, Varsha was saying yes. सही है ना? -1 तो ठीक है. Now let me find RHD and then RHD at x equal to 1. ये पॉइंट वाइज फिनोमिना है तो पॉइंट लिखना जरूरी है, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं. And as per the definition, it will be limit h tends to 0. fa plus h minus fa, f1 plus h minus f1 whole upon h. Correct? Isn't visible? Limit h tends to 0. f1 plus h कितना होता है? कितना हो गया यहाँ पे? 1 plus h बोले तो bigger than 1. Bigger than 1 मतलब this will be applied. So x के प्लेस पे मैं 1 plus h लिखने वाला हूँ. 1 plus h minus 1 minus f of 1. मैं सही लिखा ना? 1 plus h minus 1. हाँ, minus f of 1. f of 1 यहाँ पे लाई कर रहे हैं. 1 minus 1 0 whole upon h cancelled. It will be limit h tends to 0 h upon h. Correct? 1. Correct? 1 है ना? Both are unequal. सही लक्षिता, राइट. तो both are unequal. तो I will say that LHD is unequal to RHD at x equal to 1. So fx equal to mod x minus 1 is not differentiable at x equal to 1. Okay, students, 5.2 contains very less questions. और मुझे पता है कि ये अपेक्षा करना बहुत ज्यादा नहीं है कि आप सभी लोग उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस ऑनगोइंग कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस सुपर इंपॉर्टेंट थिंग्स. क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड सम मोर क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक. सो टिल देन, thank you, bye bye, and complete your notebook work and understand this concept. Very important. Thank you. Have a good day.